Welcome back, everyone. Now, look, admit cards of PCM has been released. Reverse counting start. 5, 4, 3, 2, 1. Means now exams are very nearby. Starting from 20, 21st, like this. You all are desperate. पण भिवू नका, मी तुमच्या पाठीशी आहे. 80 sir. Always with the students. So we have very less days remaining with us. 12th standard, I have tried to give number of important concepts, shortcuts, but now we are lagging in days, in terms of days. So now, 11th standard, as I have discussed in my starting videos, these are the 10 topics for 11th standard. 20% weightage. So keep in mind 80% weightage till to 12th standard. But 12th standard number of topics I have covered. So now let us focus on these topics. And also you must know which part is omitted. वो JEE और JEE एडवांस की तरफ प्रिपेयर नहीं करना है. सीईटी बहुत इजी आता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है बच्चों को. इवन जिनको 95% अबव रहता है, 95% अबव इन जेई में, they struggle to cross 100 in MST CET. Here you should know everything about your syllabus. Restrict to your syllabus. So you should know everything about which part is there, which part is omitted, which part is important. 3 things. Now, complex numbers. This is very tough part for JEE men. But CET, only simple level of sums will come in exam. Mostly sums based on higher powers of I, omega, cube root of unity. Only these two parts mostly will come in MST CET. Other parts, higher parts. Look, square root of complex number is omitted from the syllabus. Which part is omitted? Square root of complex number. De Moivre's theorem is omitted. It is written in government notification. Representation of complex number in Argand's plane, that part is also omitted. तो ये सब चीजें याद रखना है. Accordingly, you have to do your preparation. Again, I am telling you, this book, सब नहीं करना है. Only 5-6 days are remaining. If you do throughout revision, you can score. Sums based on higher powers of I and cube root of unity. Soon I will solve some MCQs to actually give the ideas of which type of sums can come. Functions. Set relation part is omitted. Look, function part is already there. Composite of functions, inverse of functions, or simple sums will come. Domain and range of simple functions. Only this part will come in MST CET 2021. So mostly domain and range type sums always come in MST CET if you go according to the past papers. I will solve few MCQs to let you know exact which type of sums will come in exam. Limits continuity. I have given all formulas. Continuity is totally based on limit. Only here we have concept. Left hand limit equal to right hand limit equal to function value, means the function is continuous. All shortcut formulas of limits are valid for continuity as well. Only here you have to remember, infinity type of sums are omitted from the syllabus. Infinity type of sums are omitted. Whichever part is there for limit, same part is there for continuity.
And also remember, differentiability implies continuity, but converse is not true. Very important. Differentiability implies continuity, but continuity does not imply differentiability. Next, you have permutation combination. Look, only one question is expected, only one sum, because only 10 sums will come. One sum carry 2 marks each. Permutation combination proofs are omitted. Listen carefully. Permutation combination proofs of NPR, NCR are omitted. All lengthy sums are omitted. Simple sums will come. Which type of sums will come? I will explain it soon. Next, trigonometry 2. The most important topic. Compound angles, sums on factorization, defactorization formulas. Do your textbook. Only textbook type sums will come in exam. Together with trigonometry function of 12th standard. Properties of triangle, general solution, principal solution, polar coordinate. This type of sums can come in exam. Remember, proof of sine rule, cosine rule, application of sine rule, cosine rule are omitted from the syllabus of MST CET 2021. तो ये हमेशा ध्यान में रखना है. Then you have straight lines. Simple topic, scoring, one sum will come. Straight lines and pair of straight lines are dependent topics. Same concept you can apply here in pair of straight lines. But यहाँ पे family of line part is omitted from the syllabus. Family of lines वो वाला part नहीं करना है. उसमें horrible sums दिए हैं टेक्स्ट बुक में. नहीं तो तुमको लगे वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, वही आ जाएगा. अरे कुछ नहीं आएगा. एक बार 80 सर ने बोला नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा. तो वो पार्ट नहीं करना है. कौन सा पार्ट करना है? Excluding that part. Family of lines, that is omitted. Then conic section completely omitted. Only circle part is there. In circle, director circle, condition of tangency, this part is omitted from the syllabus. So you have simple sums. I am going to explain all topics, important sums according to the numbers given here. So not to worry. But first you must remember which part is omitted from MST CET 2021. नहीं तो पूरा रामायण पढ़ लिया, मालूम नहीं राम कौन है. ये स्टूडेंट का बहुत बड़ी गलती है. पूरा अभी 3-4 दिन बाकी है, क्लास वाले बताते नहीं है, कोई बताते नहीं है. बच्चे ये एडवांस का बुक, ये बुक, ये बुक. देखा क्या हाल हुआ अभी. जेई मेन के पीछे भाग रहे हो, जे एडवांस के पीछे भाग रहे हो आप लोग. Look, still you have chance. 95 percentile and above in mathematics. 80 सर बोलते हैं वही करना है, वही सुनना है अच्छे से. But only 3-4 days are remaining. So listen and try to do the revision as I am telling to all of you. Circle, condition of tangency part, director circle, that part is omitted. Here simple sums will come. Like circle touching x-axis, y-axis, touching both axes, diameter form. Find center and radius, concentric circle. I am going to explain you. टेक्स्ट बुक हमेशा साथ में रखना, सामने रखना. तो मैं क्या क्या बोल रहा हूं वो हिसाब से आप मार्क करते जाना. शायद मेरी एडवाइस हर साल तो हेल्प करते हैं. येणार म्हणजे येणारच. अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने बोला नहीं आया है. बट अब 2-3 साल ये टोटली डिफिकल्ट ईयर्स फॉर एवरीवन, मोस्टली फॉर स्टुडंट्स. पण भिवू नका, मी तुमच्या पाठीशी आहे.
Whatever I am telling, please listen. Look, through this video, I am just giving the message to my students who are eagerly waiting, जिनको मैं हेल्प नहीं कर पाया, उनके लिए ये वीडियो है. Okay. Then probability, simple sums will come, base theorem type sums will not come. तो वो पार्ट नहीं करना है, वो सबसे हॉरिबल और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल टू डेटा इज नॉट देयर इन द सिलेबस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज आल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस. तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है. नाउ I will start taking topic by topic. Okay, I am going to start explaining you topic by topic. Okay. Now, complex number, some important types for MST CET 2021. What happens, student 12th standard they practice more, and it's my guarantee number of students they are much more worried about their 11th standard topics. So look, important types I told you, simple sums will come mostly on powers of I, omega, and simple sums, so not to worry. Like JEE, complicated sums will not come from this topic. Now, this type of sum, this expression is rational, irrational, complex number or unity. Some complicated solutions are given in digest, mostly now unit digest, target publications. Number of complicated solutions given, but for MCQs you must get answer in 30 seconds, 20 seconds. Students are not able to get answer faster. So always remember these two things. जल्दी क्लिक नहीं होता है लोगों को. ये ओमेगा -1 plus √3i upon 2. This special number omega cube root of unity. Omega cube is 1. So whenever you see this type of expression, बहुत important है. JEE में भी इसके सम्स आते हैं हमेशा. So look, so good student, what he or she will do, he or she will multiply and divide by 2 like this. So this part become omega. So this become 2 omega cube. But omega cube is 1, the answer is 8. Means a rational number. So A option is right option. हमेशा ओमेगा के टर्म में सम्स आएंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो वो फट से क्लिक होना चाहिए. आंसर 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 विद इन 2 सेकेंड्स. ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना है आपको. ये ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा रेज़ टू 3n इज आल्सो 1, ओमेगा रेज़ टू 6, ओमेगा रेज़ टू 9. 3 का मल्टीपल दिखा ओमेगा में तो 1 आता है आंसर हमेशा. That is the important part. So look, within 2 seconds you can solve the answer. I square, I cube, I4. Again student, they will take time. Always remember, sum of 4 consecutive powers. Sum of 4 consecutive powers of I is always 0. ये सबसे important है. I square, I cube, I4. 4 consecutive powers, whatever they may be. Answer is 0. Answer is 0. So, I10, I11, I12, I13. What is the answer? 0. I14, I15, I16, I17. What is the answer? 0. Sum of 4 consecutive powers of I, 0. Always. In fact, I10, I20, I30, I40. That also becomes 0. So that is the important logic that you must remember. Now this term. Here students start putting the values.
Obviously they get answer, but time get consumed extra. So here always look, simple shortcut. Answer is always least power of numerator upon least power of denominator, because I raised to 584 you take common and I raised to 574 you take common from denominator, same terms will come. So finally you are left with I raised to 584 upon I raised to 574, मतलब I10 मतलब I8 into I square. So answer is -1, because I raised to 8 become 1, I square become -1. So immediately your answer will come in 2 steps. तो ऐसे सम्स कभी भी दिखा, शॉर्टकट लीस्ट पावर ऑफ I from numerator divided by least power of I from denominator. So 584 minus 574 I10. Now you know the logic, you can get the answer directly. For higher powers of I, always divide by 4. Remainder 0 मतलब 1, remainder 0 मतलब 1. अगर 4, 8, 12 ऐसे है तो आंसर हमेशा 1 आता है. रिमाइंडर 1 मतलब I, रिमाइंडर 2 मतलब -1, रिमाइंडर 3 मतलब -I. You can get the answer directly in one step for any higher powers of I. Now next, this sum is very important. Here student try to expand using De Moivre's theorem or number of things they apply. No, यहाँ पे एक ही लॉजिक याद रखना है. Simple logic you have to remember. Simple logic. 1 by I is minus I. 1 by I is minus I. So your expression become 1 plus I, 1 minus I raised to 4. Done. A plus B, A minus B, A square minus B square. So 1 minus I square is -1. Minus minus plus. So 1 plus 1, 2 raised to 4. So answer is 16. And immediately your answer will come. Now, let us first move to sum number 9, sum number 10, sum number 11, sum number 12, sum number 13. ऐसे सम्स ही आएंगे एग्जाम में. इवन JEE मेन में ऐसे सम्स आते हैं हमेशा. Now, look, students start applying De Moivre's theorem, complicated, but look, this part is nothing but omega, and this part is nothing but omega square. ये याद रहना चाहिए आपको. तो omega raised to 18, omega square raised to 18, 1, omega raised to that is 1. The answer is 2. So immediately your answer will come in 2 steps. आंसर फटाक से. हमेशा ओमेगा के टर्म में सम आएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो उसके लिए रेडी रहना है आपको. नेक्स्ट, दिस सम वेरी इंपॉर्टेंट. ये जब मैं क्लास में देता हूं इसको आता ही नहीं सॉल्व करना है. यहां पे नंबर्स नहीं है. सो a good student, what he or she sees, C omega square C. तो वो बैलेंस करने के लिए ये मेन स्टेप है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर. नाउ लुक एट द लॉजिक. नाउ योर डिनोमिनेटर बिकम C ओमेगा स्क्वायर, A ओमेगा क्यूब मतलब A, और B ओमेगा रेज़ टू 4 मतलब B ओमेगा. ये और ये सेम हो जाएगा तो कट. तो योर आंसर इज ओमेगा स्क्वायर. So the main step was to multiply and divide by omega square, and within one step you will get answer. So the logic is here main. Now sum number 12, this sum very important. Listen, यहाँ पे ऑप्शन दे देता है 2AB, 6AB, 12AB, 0. Obviously if you expand the bracket it become complicated, but you are my students, तो A और B को 1 डाल दो. Put A equal to 1, B equal to 1. A and B can take any value.
तो 1 1 डालोगे तो क्या हो गया 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 ए और बी को 1 डाला तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 का स्क्वायर तो आंसर 6 आया मतलब फाइनल आंसर इज 6 AB and within 2 steps you will get answer. This is an extraordinary thinking only my student can do. Put simple values to NB, say 1 and 1 and immediately your answer will come. Now this sum 1 plus omega minus omega square 1 plus omega square minus omega 1 plus omega raised to 4 is same as 1 plus omega 1 plus omega minus omega square omega raised to 8 is omega raised to 6 into omega square omega raised to 6 is 1 so omega square 1 plus omega square minus omega so omega cube so answer is 1 so within 2 steps you will get the answer within 2 steps you will get the answer. Now this sum student always get confused with this type of sum अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर आप डाइजेस्ट देखोगे ना इसका हॉरिबल सॉल्यूशन दिया हुआ है पेज भर के वो लोग ने सब सॉल्व किया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा वैसा कुछ नहीं करना है अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो अल्फा यू टेक एज ओमेगा बीटा यू टेक एज ओमेगा स्क्वायर 1 minus omega 1 minus omega square 1 minus omega square 1 minus omega raised to 4 and when you expand the bracket as I explained you the previous answer is 9 and immediately you will get the answer. In this type of sum whenever alpha and beta are given complex cube root of unity alpha को ले लो omega alpha square और beta you take as omega square and substitute it in any expression फटाक से आंसर आएगा फटाक से so that is an extraordinary thinking. Now we are left with these two sums here. Those who know De Moivre's theorem, even it is not in the syllabus of MTCT, they can do the sums directly. Or otherwise, what you do? To raise to 8 we cannot find. तो इसको raise to 4 लिखना है बस. 1 plus I square 1 square I square 2I but I square is -1 1 minus 1 cancel the 2I upon root 2 का स्क्वायर ऊपर आ रहा है 2I upon root 2 का स्क्वायर similarly here you can write 1 minus I by root 2 square raised to 4 so A square B square minus 2AB 1 square I square get cancel तो यहाँ पे क्या आ रहा है -2I upon root 2 square raised to 4 sorry now 2 by root 2 2 by root 2 2 by root 2 2 by root 2 is root 2 I raised to 4 is 1 1 plus 1 answer आ गया 2 now you are very smart what is the answer here what is the answer here 2 totally wrong यहाँ पे ध्यान देना है ये माइनस रेस टू इवन पावर है इसलिए +1 बनेगा बट यहाँ पे स्क्वायर रेस टू 5 ऑड पावर बनेगा तो इसके लिए इसका आंसर 1 आएगा इसका आंसर यहाँ पे I रेस टू 5 बनेगा ये I रेस टू -5 बनेगा यहाँ पे -I रेस टू 5 तो ये सब में I माइनस I तो इसका आंसर 0 हो जाएगा you have to be very careful in this type of sums so you can solve this sum rapidly no problem now this sum इसका 2 पेजेस का सॉल्यूशन है डाइजेस्ट में और ये सम जेई मेन में भी आ चुका है दिस सम केम इन JEE मेन एज वेल if x plus I is this then what is the value of x square plus y square whole square 2 pages solution is given in your digest so called digest prepared by experts look now this sum the x square plus y square इसलिए a good student will do the conjugate so that become a minus ib c minus id
x plus iy equal to a plus ib c plus id. now मल्टीप्लाई, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू दिस. तो ये दो मेन स्टेप है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर whatever sums I have marked, this type of sums will come in exam. Prepare from your textbook. Look, one topic is done completely. Okay, now next topic. Okay, now next topic is functions. For functions, I told you only domain range type sums will come. So look, page number 129 of textbook. This chart is very important. इसके बेस पे sums आते हैं. ये चार्ट करना है और मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 बस उतना ही करना है. फॉर फंक्शंस पेज 129 ऑफ टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंट सम्स. ये डोमेन रेंज के ही सम्स आते हैं. अगर आप पास्ट एमटीसीटी पेपर्स देखोगे ना, ये आपको अच्छे से करना है, खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला. व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? सो दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेज नंबर 129, पेज नंबर 129. इसमें कोई ऐसे शॉर्टकट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ डोमेन रेंज के सिंपल सम्स आते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू डू दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 and the chart given on page 129. Now next topics are limits and continuity. Already I have made multiple parts of limit with extraordinary shortcuts. 4 or 5 videos that you have to do. Look, limit of infinity type is not in the syllabus. वो छोड़ के बाकी करना है. And you have to watch my videos. Limit and continuity. Only one sums will come, so not to worry about that. Limits, all shortcuts I have taught you. That you have to remember. Only textbook type sums will come. And I have taught you all shortcut formulas. Mostly the L'Hopital rule that you have to use. Next, permutation combination. Permutation combination, you have to do combination all word problems properly. Circular permutation starting 2 sums. And miscellaneous exercise all sums. Miscellaneous exercise all sums. That is very important for MST CT 2021. Pascal formula. This. इसके ऊपर सम आता है. NCR minus 1 N plus 1 CR. 12C4 12C5. So what that become? एक कम एक ज्यादा हमेशा, तो ऊपर एक ज्यादा, तो 13C5. 1 step you'll get answer. ये फॉर्मूले पे सम्स आते हैं हमेशा. एंड miscellaneous exercise all sums. Mostly 6 girls and 2 boys to be seated for a room photograph. What is the total number of ways the 2 boys are not together? What is the total number of ways the boys are always together? This type of sums always comes in MST CT 2021. So that you have to do. Today you practice. Next videos I will take more important sums to explain. Just now, today's video, only you mark down the things which you have to do. Because there is no shortcut here in permutation combination. Only word problems will come, or simple problems depend on this Pascal formula. So that you have to do well. Now, straight lines, circles,
coordinate geometry part. Now straight line also include locus sums, and any sums will come on standard formulas. Slope of line passing through 2 points, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Inclination is theta, slope is tan theta. Then slope point form, point, slope, point. Then 2 point form, double intercept form, x upon a plus y upon b equal to 1. और सबसे important distance of a point and line. So if point is x1 y1 and equation of line is ax plus by plus c, then distance is ax1 by1 plus c upon root a square b square. Distance of point and origin, distance of line and origin. So if line is ax plus by plus c, distance from origin is c upon root a square plus b square. Pair of lines के लिए भी important है बहुत. Distance with two parallel lines, ax plus by plus c1 equal to 0, ax plus by plus c2 equal to 0. The distance is mod c1 minus c2 root a square plus b square. Very important. And as I told you earlier, इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज का पार्ट है वो ओमिट है, वो सिलेबस में नहीं है, फैमिली ऑफ लाइंस, तो वो गलती से भी नहीं करना है. नाउ हाउ टू गेट आंसर फास्टर फॉर नंबर ऑफ सम्स. नाउ these are the normal solutions which take 5-6 minutes every time. A and B are 2 points. Find locus of point which is equidistant from A and B. So this is the general solution. Let P x y be any point on the locus. So PA equal to PB since P is equidistant from A and B. So here every sum depend on distance formula. So PA square equal to PB square. Applying distance formula, so you have x plus 5 the whole square, y minus 2 the whole square, x minus 4 the whole square, y minus 1 the whole square. After solving, you got this. And then you find you are sitting alone in the classroom. 95% ऐसे नहीं मिलेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए. Today's video I am just telling you small things. Next videos I will cover up 12 standard topics. क्या करना है क्या नहीं करना है, and I will make more videos. ये मत सोचो कि सर स्टॉप कर देंगे 2 वीडियो बना के, ऐसे नहीं है. I will keep on making the videos on individual topics. But तब तक आपकी तैयारी होनी चाहिए अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फॉर सीटी पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. ओके, सो लुक, विल टेक टाइम. ऐसे समय लुक, P is equidistant ना, हमेशा मिड पॉइंट निकाल लेना है, हमेशा. Look now, midpoint is always equidistant from A and B, so you can work out a midpoint. So that is minus 1 by 2, 3 by 2. So look, substitute. Midpoint will always satisfy the correct option. So it is minus 9 by 2, minus 3 by 2 plus 6. It is minus 6 plus 6 to 0, satisfy. That means this option is the correct option. So whenever it is sum, a point is equidistance, ऐसा भी क्यों करने का, सिर्फ मिड पॉइंट निकालने का, and answer will come in 2 steps. Now, very important sum. A and B are 2 points. Find equation of locus of point P which subtends right angle. The angle APB is 90 degree. So this is the normal solution. Complete. Let P x y be any point on the locus. So angle APB is 90 degree. So we can apply Pythagoras theorem. So AP square plus BB square is AB square. Then applying distance formula. Then this, then this, then this, then this, then we are sitting alone in the classroom. You are my student. ऐसा भी क्यों करने का? Extraordinary methods only my student can use. Extraordinary method only my student can use. So whenever this is 90 angle, one step you will get answer. Is this x minus x1, x minus x2, y minus y1, y minus y2 equal to 0. So look, x square, यहाँ से y square,
यहां से -3x -1x -4x, यहाँ पे -6y -5 -11y, और कांस्टेंट हम यहां से +3, यहां से 30। अरे आंसर आ गया भैया, एक स्टेप में आंसर आ गया। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड। जब भी 90 डिग्री रहेगा तो लॉजिक क्या है उसका, एक स्टेप में आंसर। दिस लॉजिक इज नथिंग बट द डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, क्योंकि 90 डिग्री बना मतलब ये ए और बी हमेशा करेगा डायमीटर ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला क्या है डायमीटर फॉर्म का, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 0। एक स्टेप में ये सब का भी आंसर आ जाएगा। या चलो स्ट्रेट लाइन, और इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना वो करना है, उसमें कई सम्स आएंगे, वही टाइप के सम्स आएंगे नंबर चेंज करके, तो वो आपने अभी प्रैक्टिस करो आज सब लोग ने। नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर मोर इंपॉर्टेंट सम्स of 12th standard also. Now, look, in physical lectures, I always told the students to bring the textbook. The students, they remember well. And I mark the sums from textbook. Only particular sums I need to explain. And after exam, you can check on my social media sites. Student, they comment, येणार म्हणजे येणार, आला म्हणजे आलाच. तो इसके लिए जो बोल रहा हो वो करो। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है कि सब पूरा शॉर्टकट और सब बताते जाओ, फिर भी हर टॉपिक के वीडियोस आते ही रहेंगे। बट अभी लास्ट मोमेंट में आपको क्या क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो और फॉलो करते जाओ। मेरे वीडियोस आते ही रहेंगे, जिसके एग्जाम लेट है दे कैन गेट मोर बेनिफिटेड, बट जिनके एग्जाम कल परसों है उन्होंने ध्यान से सुनना है कि क्या क्या करना है। अब सर्कल पे मैंने बोला कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के सम नहीं आएंगे, ओमिट है। कोनिक्स पार्ट है ही नहीं, करना ही नहीं है, भले टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर दो। सिंपल सम्स, डायमीटर फॉर्म, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मिसलेनियस एक्सरसाइज सम्स डिपेंड ऑन दिस पार्ट ओनली। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दोज हु हैव गिवन जेईई मेन उनको मालूम है सबसे इजी टॉपिक है। जेईई मेन में दो ही सम्स आते हैं बच्चों को हमेशा, एक लॉजिक और ये डिस्पर्शन, उसके बाद एक भी नहीं आता है। दैट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में 8.2 एक्सरसाइज करना है सिर्फ। और सिंपल सम्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट चेंज इफ द डेटा इज एडेड विथ अ कांस्टेंट नंबर, डेटा इज सब्ट्रैक्टेड कांस्टेंट नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ये क्वेश्चन आता है मतलब आएगा ही हमेशा, और बाकी कुछ भी नहीं आता इसमें। ये याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एक ही क्वांटिटी से आपने डेटा को बढ़ा दिया या कम कर दिया तो नहीं होगा, और आपने मल्टीप्लाई किया तो दैट अमाउंट स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेस, डिवाइड किया that amount standard deviation decreases. So standard deviation is unaltered if you add constant number in each data value or you subtract a constant number to each data value. Very important. Coefficient of variation part is omitted. Probability completely depend on permutation and combination. Permutation combination आपने अच्छे से किया है, same sums will find in probability. और probability में वो sums है इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट का, वो अच्छे से करना है। और लास्ट वाला ऑड्स वाला, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट फेवर, पीए अपॉन पीए डैश एंड पीए डैश अपॉन पीए, ऑड अगेंस्ट ऑड इन फेवर, ये दो चीजें। फिर वैसे सम्स ए बी सी, ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम independently. What is the problem? That problem is solved. What is the problem? That problem is not solved. फिर वो लीप ईयर वाला सम, लीप ईयर हैज हाउ मेनी संडेज, मंडेज, वो सब सम्स करना है। प्रोबेबिलिटी वगैरह में शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके अच्छे रहने चाहिए। बट यहाँ पे डरने की बात नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक लेवल सम्स विल कम, सो यू टू डू द टेक्स्ट बुक लेवल सम्स प्रॉपरली। Limits, continuity, I have taught all the shortcuts. 12th standard, more topics.
will come in the next video lectures. So here, whatever things I have told, keep on watching the video number of times. Make a note. Do the formulas well. Do your textbook well. 80 to 90% questions are always friend from the textbook. Always the paper setters know what portions are deleted. Accordingly, they put the sums. So not to worry. Even if it is written, it is of JEE level, वैसा आता नहीं है कुछ. एकदम सिंपल आएगा पेपर. But वहाँ पे आपका दिमाग, only your skill will help, and my blessings will help all of my students. Okay, so next video lecture, I will show you the remaining topics of 12th standard trigonometry. I will take together 11th standard trigonometry plus 12th standard. So that is why that you will see in the next video. So whatever things I told, please do them properly. Okay, bye all of you. Have a great day. Okay.